Children, this is part 2 of the story, The Face on the Wall. We have seen that at Dabney's house there was going on a party, and Dabney had a guest also who was a little man with an anxious face. Dabney's guest was a little man with an anxious face. Now that man, Dabney's guest, is narrating an incident which had happened to him with him only. So he was looking for the man whose face resembled the face on the wall of his house. So at last he was able to see that man, to find the man whose face was exactly like the face which had been carved out on the wall of his house. So he was able to find that person. But that person had boarded a train and had, along with his friends, he had boarded a train and had left that place. So I hastily purchased a ticket to Folkestone. इसने भी कुछ नहीं सोचा और फट से फोकस्टोन की एक टिकट को परचेज कर लिया. दिस इज द नेम ऑफ ए प्लेस. होपिंग टू कैच हिम ऑन द बोट बिफोर इट सेल्ड. इसने सोचा जल्दी से मैं ट्रेन से उतर के बोट में कहीं वो चला ना जाए, मैं पहले ही उसको पकड़ लूँगा. आई विल ही वॉज होपिंग दिस थिंग कि वो उसको पकड़ लेगा और उससे बात कर लेगा. बट एट फोकस्टोन ही गॉट ऑन द शिप बिफोर मी विद हिज फ्रेंड्स. जैसे ही वो फोकस्टोन में ट्रेन से उतरा, उसने उतर कर क्या किया, मेरे सामने ही वो एक शिप में बैठ गया. एंड दे डिसअपियर्ड इनटू अ लार्ज प्राइवेट केबिन. और एक प्राइवेट केबिन में, अपार्टमेंट में, सोचो कि जो उसके शिप या के अंदर बड़ा सा एक केबिन है, उसके अंदर वो जाके अपने फ्रेंड्स और 2 लेडीज एंड 1 लिटिल गर्ल के साथ था वो केबिन में. ही गोज इनसाइड. तो ये उसको पकड़ नहीं पाया. Again I was defeated. He was defeated in catching hold of that man, meeting that man whose face resembled the face on the wall. But I was determined to go with him. But I was fully resolved. I had decided I have to meet him. I wanted to meet the man. I had only just enough for a single fare to Boulogne. Boulogne is also the name of a place. अब बुलोयन में वो जा रहा होगा शिप. इसके पास एक तरफ की ही टिकट थी बुलोयन जाने के लिए, ओनली सिंगल फेयर था. बट नथिंग कुड स्टॉप मी नाउ. स्टिल ही सैट इन द शिप. टिकट पैसे है नहीं है, नथिंग कुड स्टॉप हिम. आई टुक अप माई पोजिशन ऑपोजिट हिज केबिन डोर एंड वेटेड. He took up his position in front of the cabin door and waited for the man to come out. After half an hour, the door opened and he came out with the little girl. He waited for half an hour in that ship, and after half an hour, the cabin door opened and he came out along with that little girl. My heart beat fast. There was no mistaking the face. No mistaking means clearly. एविडेंटली, बिल्कुल क्लियरली वही चेहरा. एवरी लाइन वॉज द सेम. चेहरे पे सेम लाइन थी. ही लुक्ड एट मी एंड मूव टूवर्ड द वे टू द अपर डेक. डेक क्या होता है? फ्लोर ऑफ ए शिप. जो शिप का कोई फ्लोर ऊपर ऊपर बने होते हैं उसको डेक बोलते हैं. तो ही मूव टूवर्ड्स द अपर डेक. इट वॉज नाउ और नेवर आई फेल्ट. मुझे लगा कि आई हैव टू कैच होल्ड ऑफ हिम एंड टॉक टू हिम, अदरवाइज आई वोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी. नो और नेवर मीन्स दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू टॉक टू हिम. Excuse me, I stammered. What is stammered? Stammered means when you speak with great difficulty, when you speak with pauses, you can't speak clearly. And so when you उसको pause करते हुए with great difficulty, excuse me, but do you mind giving me your card? अपना कार्ड दोगे मुझे? I have a very important reason for in asking it. I asked for his card. He seemed to be greatly surprised, but he granted my request. He agreed. Granted my request means he agreed to give me the card. Handing me his card, he
hurried on with the girl. It was clear that he thought me mad and decided to please me. He might have thought me, उसने उसको पागल सोच के अपना कार्ड दे दिया, and he went along with the little girl upstairs on the upper deck, holding the card tight in my hand. क्योंकि पागल हुआ हुआ था देखने के लिए कि फेस जैसा आदमी कोई ना कोई तो है, तो अब कार्ड ना कहीं गिर जाए, इसलिए टाइटली इसने कार्ड को पकड़ के रखा. आई हर्रिड टू ए लोनली कॉर्नर ऑफ द शिप एंड रेड इट. ऑन इट वर द वर्ड्स, मिस्टर ऑमंड वॉल. Where was he living? This guest, Lebanese guest, was living at England's Ormond Street. इसका मैन का नेम क्या है? मिस्टर ऑमंड वॉल, with an address at Pittsburgh, USA. This man was the resident of USA, but his name resembled with the name of that place where the guest was staying. Guest कहाँ पे रह रहा था? ऑर्मंड स्ट्रीट, और इस आदमी का नाम है ऑर्मंड वॉल. I remember no more until I found myself in a hospital at Walian. वॉलियन के एक हॉस्पिटल में, ये मतलब ही लॉस्ट हिज सेंसेस, ये वहाँ पे बेहोशी हो गया होगा. ही मस्ट हैव बिकम अनकॉन्शियस एंड पीपल मस्ट हैव टेकन हिम टू ए हॉस्पिटल. तो वहाँ पे ये इसने अपने आप को पाया. देयर आई ले इन ए ब्रोकन कंडीशन फॉर सम वीक्स. और ही ब्रोकन कंडीशन में बहुत डिप्रेस्ड सा होकर कि कैसे उस जो मैं रहता हूँ, जिस जगह इसका फेस बना है वो भी क्या है, उस जगह का नाम भी ऑर्मंड है और इस मैन का नाम भी ऑर्मंड है. देयर इज सम कनेक्शन. ही वॉज साइलेंट. फिर इसके बाद इतना कह के जो गेस्ट था वो रुक जाता है. I went back. He started once again after a moment or so. I went back to Great Ormond Street. ये इंग्लैंड वापस चला गया to find out all I could hear about this American. ये अपने ऑर्मंड स्ट्रीट वापस चला गया और ये फाइंड आउट करने के लिए कि मैं इस अमेरिकन की लाइफ के बारे में देखता हूँ कि ये कौन है, इसके बारे में, ताकि मैं कुछ जुटा पाऊँ. तो वापस अपने इंग्लैंड चला जाता है. And so the time went on until yesterday morning. Time kept on moving and yesterday morning को क्या होता है, I had slept till late. कल मॉर्निंग में मैं थोड़ा लेट उठा था. When I woke up, the room was bright and with sunlight. I looked at once at the wall on which the face is to be seen. I rubbed my eyes and sprang up. जैसे ये सुबह उठा, लेट उठा था, तो खूब रोशनी थी रूम में, तो मैंने एकदम से अपनी आंखें मली और मैं जंप किया. ही स्प्रैंग अप विद सरप्राइज. इट वॉज ओनली फेंटली विजिबल. ये जो फेस था, इट हेयर मीन्स फेस ऑन द वॉल, वो हैड बिकम वेरी डिम. इट हैड बिकम वेरी लाइट. लास्ट नाइट इट हैड बीन clear as ever. I could almost hear it speak. Now it was a ghost of itself. A ghost of itself means it had become very weak. It had become very faded, dim. जैसे इंसान कोई नहीं होता, उसका भूत ही है बस, ऐसे हो गया ये. फेस ऑन द वॉल was no more now so prominent. It had become very dim. Confused and sad, I went out. The early editions of the paper were already